Students, so now start miscellaneous exercise. Question number 7th. Question number 7th. If A inverse given, so A inverse is equal to 3 minus 1 1 minus 15 6 minus 5 5 minus 2 and 2, and B given 1 2 minus 2 minus 1 3 0 0 minus 2 1, then find AB whole inverse. Find AB whole inverse. AB whole inverse find. So for AB whole inverse, since AB inverse is equal to, what is AB inverse? Inverse is AB whole inverse is equal to B inverse A inverse, and B A inverse given, matrix B also given. So find B inverse, then find its product. कर लेंगे. Okay. Next, question number 8. Question number 8. A given, matrix A given, A matrix given, then verify that adjoint of A whole inverse is equal to adjoint of A inverse. Adjoint of A whole inverse is equal to adjoint of A inverse. So for this, first find A inverse. मैट्रिक्स A गिवन है, A इनवर्स फाइंड कर लोगे. बिटवीन A इनवर्स आल्सो फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ A. जब आप A इनवर्स फाइंड करोगे तो उसके पहले एडजॉइंट ऑफ A भी निकल गया. एडजॉइंट ऑफ A इज आल्सो ए मैट्रिक्स. सो फर्स्ट फाइंड एडजॉइंट ऑफ A, ये निकाल लेंगे एडजॉइंट ऑफ A. देन फाइंड A inverse, use formula adjoint of A by determinant of A. Then suppose if so that A inverse is equal to B, we have to show that A into B is equal to B into A is equal to I. ये दिखाना होता है. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एडजॉइंट तो फाइंड कर लियो. अब इस adjoint of A inverse. A inverse is also a matrix. A inverse is also a matrix. So now find adjoint of A inverse. ये find कर लेंगे adjoint of A inverse, because A inverse is a matrix. उस matrix का adjoint find कर लें, cofactor minor. Then use this property. If so that A inverse is equal to B, then we have to show that A into B is equal to B into A is equal to I. So here to show that A into adjoint of A into adjoint of A inverse. आप इसका वैल्यू निकाल लें, adjoint of A inverse, and you check that this value is identity or not. ये वैल्यू क्या आ रहा है चेक कर लें. If product of this value is identity, if this is equal to I, similarly adjoint of A inverse into adjoint of A is equal to I, therefore one is the inverse of other. So therefore adjoint of A whole inverse is equal to adjoint of A inverse. आप चेक कर लोगे. So you check that product of these two matrix identity or not. क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा इसे. And similarly second part,
Here second part, show that is verify that A inverse whole inverse is equal to A. So for this, first find A inverse, then find the product A inverse into A, or use direct property. Since A inverse into A is equal to what? I. So therefore, if A into B is equal to B into A is equal to I, so this can retain A inverse into A, this is equal to A into A inverse is equal to also I. So if A into B is equal to B into A is equal to I, then both are inverse to each other. That is, A inverse is equal to B and B inverse is equal to A. So here, therefore, A inverse whole inverse is equal to A. Proved. Now question number 12th, same as question number 12, same as example number. Question number 12, same as previous example, example number 15. This question number 12, same as example number 15, page number 117. So 12 सेम एग्जाम्पल 15 है, ये आप लगा लोगे, बाकी सेम है, सिंपल से क्वेश्चन है. जैसे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, ये 1 के हेल्प से 2 को 0 कर लो, R2 और R3 दोनों को 0 कर देंगे एंड देन एक्सपेंड इट. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 15. So what is question number 15? Verify that or prove that. Here using property, prove that. Question number 15, determinant is sin alpha, sin beta, sin gamma, cos alpha, cos beta, cos gamma, cos alpha plus delta, cos beta plus delta, cos gamma plus delta. Prove that this is equal to 0. 0 proof करना है. So this is LHS. Now use formula cos A plus B. आप इसमें फॉर्मूला यूज कर दो cos A plus B, same as C3. Use all formula cos A plus B. So this equal to sin alpha, use formula. So sin alpha, sin beta, sin gamma, cos alpha, cos beta, cos gamma, and cos A plus B, that is cos A into cos B plus sin A into sin B. So cos alpha into cos delta minus sin alpha into sin delta. Here cos beta into cos delta minus sin beta into sin delta, cos gamma into cos delta minus sin gamma into sin delta. Now C3 is difference of two element. C3 difference of two element. This is a one element, this is a other element. So this determinant can be expressed difference of two determinant or sum of two determinant. साइन यहाँ difference है, so difference of two determinant. sum भी कर सकते हो. So this can written sin alpha, sin beta, sin gamma, cos alpha, cos beta, cos gamma, and one C3 is cos alpha into cos delta, cos beta into cos delta,
cos gamma into cos delta. This is your first determinant. Then write sign plus, or taking here sign minus also, both are same. So plus second determinant is sin alpha, sin beta, sin gamma, cos alpha, cos beta, cos gamma. Then next element is minus sin alpha, sin delta, minus sin beta, sin delta, minus sin gamma into sin delta. This is sum of two determinant. Now check that C3 and C2 both are identical or not. Check that C3 and C2. C3 या C2 का रेशियो निकालो, क्या आएगा? C3 बाई C2 करेंगे cos डेल्टा अपॉन गामा डेल्टा, cos डेल्टा सबका रेशियो cos डेल्टा. Here also C2 and C1 and C3 both are identical. So this value is 0 because C2 and C3 are identical, minus this value is also 0 because C1 and C3 are identical. So is equal to 0, and 0 plus 0 is equal to 0. Here this both are identical. Here cos 2, that is C2 and C3 identical. Here C1 and C3 identical. So both are equal to 0. Now question number 16. Question number 16 is solve by matrix method. Solve by matrix method, and question is 2 by x plus 3 by y plus 10 by z is equal to 4. Second equation is 4 by x minus 6 upon y plus 5 by z is equal to 1. Third is 6 upon x plus 9 upon y minus 20 upon z is equal to 2. So question is solve the system of following equation, that is solved by matrix method, not direct method. So for matrix method, here variable written in 1 by x, 1 by y, 1 by z. Difference only variable given 1 by x, 1 by y, 1 by z. So this equation, the given system can written as Ax is equal to B, where A is equal to all the coefficient, same previous classes. So what is the coefficient? Here coefficient 2, 3, 10, 4, minus 6, 5, 6, 9, minus 20. This is A. And then x, what is x? Here x, 1 by x, 1 by y, 1 by z. So x is equal to 1 by x, 1 by y and 1 by z. This is the difference only, and same as B. B is equal to 4, 1, 2. Same as find A inverse. आप A inverse find कर लोगे. So find an inverse, and since x is equal to A inverse into B, सबका वैल्यू पुट कर दें. आप इधर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई, 1 बाई जेड, और इधर वैल्यू आ जाएंगे सपोज अल्फा, बीटा एंड गामा. सो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू अल्फा. दिस इम्प्लाई 1 बाई एक्स इज इक्वल टू अल्फा. सो एक्स इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा. सेम 1 अपॉन वाई एंड 1 अपॉन जेड. तो आप इसको कर लोगे. एंड question number 17 is A, B, C are in AP. A, B, C given AP. So AP, that is
b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2, इस टाइप का प्रॉपर्टी बताएं. एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हियर. देन क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19. आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगा लोगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं 20 मार्क्स का. टोटल 1 मार्क क्वेश्चन 20 मार्क्स हैं, तो आप जो 17, 18 है ये सभी लगा लोगे. क्वेश्चन नंबर नाउ 19. 19 इज a given. a is 1 sin theta 1 minus sin theta 1 sin theta minus 1 minus sin theta 1, where theta given, theta is lie between 0 to 2 pi. Then what is the determinant of a? Here find determinant of a. So now find determinant of a. So determinant of a is equal to determinant of 1 sin theta 1 minus sin theta 1 sin theta minus 1 minus sin theta 1. Now find determinant. So use property, and purpose of property used, make any two entries, that is maximum entries of any row or any column be 0. So if R3, when R3 is add to R1, that is R1 change to R1 plus R3, then two element become 0. Here is property R1 change to R1 plus R3, इन दोनों को ऐड कर दिए R1 R3. सो दिस इक्वल टू, यह इसमें ऐड कर देंगे वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यह इसको ऐड कर देंगे वैल्यू 0 और इसे ऐड करेंगे वैल्यूज 2. R2 इज सेम, माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा minus 1 minus sin theta 1. So 2 entry is 0. Now expand it along R1, expand कर दो. So sin plus minus plus, so sin is plus, so 2 positive. Then delete C3 and R1. 2 किस रो बिलोंग कर रहा है R1 and column C3. So delete R1 and C3. So what is the value? Minus sin theta 1 minus 1 minus sin theta. Now cross multiply. So 2 sin square theta and minus minus plus 1. So 2 into sin square theta plus 1. And since sin square theta, since sin square theta always greater equal to 0 and less equal to 1, because square value, ये sin square theta square है, so never negative. And theta here given for all theta, that is where theta is greater equal to 0 and less equal to 2 pi. So for all theta lie between 0 to 2 pi, sin square theta lie between 0 to 1. So therefore adding 1 both side, adding 1 both side, so sin square theta plus 1, here 1 plus 1, adding both side. So this is 1 less equal to sin square theta plus 1 less equal to 2. Now multiply 2 on both sides. Now multiply by 2. So 2 less equal to 2 into sin square theta plus 1 and less equal to 4. And this is the determinant of a. So this 2 less equal to determinant of a less equal to 4.
दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 2 to 4 because greater than 2 and less than this, that is option D. So now this chapter is completed, determinant chapter is completed. आप miscellaneous question number 11th, क्वेश्चन नंबर 11th का जरा सा हिंट देते हैं, आप लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 11th ये कंप्लीट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11th का हिंट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th इज अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा गिवन। एंड राइट साइड देखोगे उसमें वन फैक्टर क्या लाना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जो प्रूफ करना है उसमें देखो राइट साइड लास्ट फैक्टर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा या C1 को दे इसमें हम ऐड कर दें C3 में, सो बिकम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दैट इज यूज प्रॉपर्टी C3 चेंज टू C3 प्लस C1। C3 में C1 ऐड कर दिए या इसमें ऐड कर दोगे तो हर एक टर्म क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सो दिस बिकम्स दिस सेम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये ऐड कर दें, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दिस ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस वन ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। So now from C3 alpha plus beta plus gamma is common. So alpha plus beta plus gamma is common. Then element alpha beta gamma, alpha square beta square gamma square, then 1 1 1। अब टू एंट्री को 0 करके एक्सपेंड कर दो। सो यूज प्रॉपर्टी R1 चेंज इनटू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज इनटू R2 माइनस R3। ये टू एंट्री 0 हो जाएगा, एक्सपेंड कर दो, कुछ कॉमन भी ले लोगे। ये प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो R1 में कुछ कॉमन आएंगे, R2 में भी कुछ कॉमन होगा, कॉमन लेने के बाद एक्सपेंड कर दोगे, ये प्रूव हो जाएगा। तो अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके।